bauxite. Flow chart. Bauxite is two varieties, red bauxite and white bauxite. Red bauxite has Fe2O3 impurity. White bauxite has SiO2 n times, silica, sand is impurity. Red bauxite is purified by Bayer's process and by Hall's process. End product is Al2O3, alumina, pure bauxite. And white bauxite is purified in Serpek's process. Later, they were electrolyzed in Hall-Héroult process. I had a book named Tales About Metals. I read all the stories of all the metals. The book is no longer with me. You get impure aluminium, which is purified in Hoops process. To get pure aluminium. Two, three benches are empty. Hoops process to get pure aluminium. उधर जा सकता है ना. Roasted red bauxite. Why is it roasted? It may contain some FeO also, FeO, and that is converted to Fe2O3. Roasted red bauxite is treated with NaOH in Bayer's process. Delta Fe2O3 impurity. NaHCO3
Na2CO3. Hall's process to end up in molten NaAlO2, sodium metaaluminate. Fe2O3 is slag. I believe even silicon dioxide is also added, which converts this to silicate, slag. Slag बनाने के लिए SiO2 का. This one is treated with water, AlOH thrice, and when heated, you get Al2O3. Bayer and Hall's process. White bauxite. SiO2 is impurity. White bauxite is heated with coke and air. You get aluminium nitride. When that is hydrolyzed, you get NH3 also. Serpek's process. How is bauxite converted to nitride? Let us see. Al2O3 plus SiO2, the impurity, plus coke and oxygen and nitrogen of air. C from coke, these two from air. Now, at that high temperature, silicon becomes volatile. Carbon runs away with oxygen, CO2, this oxygen and this oxygen as well, plus silicon, because of that high temperature, vaporizes. In textbooks it is given that silicon is volatile. No. Its melting point is 1800 degrees. At that temperature it is volatile. And you should know, to melt Al2O3 itself, it requires 2000 degrees. High melting. And aluminium combines with nitrogen, giving aluminium nitride. And then that is hydrolyzed. Break the bond, 3H, 3OH. वहाँ एक चेयर डाल सकते हो. आज यहाँ सोएगा. मयांक कहा गया इधर बोई. Now, so Hall-Héroult process. Al2O3 alumina, which is pure bauxite, is mixed with
for CaF2 to decrease the melting point flux, but NCERT says that also increases the conductivity. 2015 there was a confusion about the role of cryolite and this one. I still believe that the purpose of adding CaF2 is to decrease the melting point only. That may increase the conductivity, but that is not the purpose. Fluorspar and cryolite. What is cryolite? Na3Al F6. It's nothing but a mixture of 3NaF and AlF3. Cryolite is added to increase the conductivity. Who is not conductive? पूरा Al2O3 कंडक्ट करेगा क्या? एल्यूमिनियम एंड ऑक्साइड कंडक्ट करेंगे. Which is less conductive? Oxide is more conductive. Oxide is less conductive than fluoride. Oxide is a bigger ion. Small ions are more hydrated, but here we are talking about molten solutions, molten liquids, not aqueous solutions. So oxide being big, it doesn't conduct easily. Therefore, unless oxygen goes to anode, aluminum cannot go to cathode. Oxide को anode जाना है, electron देना है, then यहाँ aluminum लेना है. So, let us start the electrolysis with AlF3. Please write start here, otherwise you won't understand anything. Start. And anode. Cathode. At cathode, aluminum gets deposited, Al3 plus 3 electrons, aluminum, okay. But who goes to anode? F minus goes to anode, graphite. F minus goes and becomes 2F2. मैंने बताया F minus को कोई भी F2 बना नहीं सकता, लेकिन here it is electricity. And this is only temporary. What happens? The liberated fluorine will oxidize Al2O3, इसको गोली मारेगा. दोबारा AlF3 बनेगा and O2, and this O2 reacts with the graphite anode, and you get CO2. So time and again you have to replace the electrodes. The electrodes have to be repeated periodically. And what is the anodic product? What is the anodic product? Strictly speaking, F2 is the anodic product. That is reacting with Al2O3 producing oxygen, and that is reacting with graphite. Anode means electrolysis, F minus. So whatever aluminum we are getting from cryolite only, AlF3 from cryolite. जो भी आ रहे क्रायोलाइट से आ रहे, अगर ऐसी बात है तो हम क्रायोलाइट को ही इलेक्ट्रोलाइज करेंगे, ये पंगा क्यों लेना है? वही हाँ AlF3, it is not available in large quantities, and we have bauxite reserves for the next 300 years to come. We have bauxite in Odisha. Now,
Most of the bauxite is available in Australia. And आधा किलो भी लिया तो चल जाएगा AlF3, क्योंकि दोबारा बन रहे हैं ना वो रिसाइकल. That's all. Sorry? Hall-Héroult process. He was the one who actually extracted aluminium by electrolysis. Next, Hoops process, refining aluminium impure aluminium to almost 99.9% pure aluminium. What is the method? Electrolysis. कैसे करेंगे? Pure aluminium is taken as cathode. Pure aluminium is cathode. And impure aluminium again is anode. And cryolite is the electrolyte, molten. Bus. Molten cryolite. Huh? That is electrolyte, which doesn't participate in the process. Next, extraction of magnesium from carnallite. From carnallite, is it K or C? C. What is carnallite? KCl, MgCl2, and ore of magnesium, 6H2. You heat that. What happens? At 350 degrees centigrade, KCl evaporates. That is its boiling point, MgCl2, dot 2H2O, minus 4H2O, 4 nikal gaye. And further, if you continue to heat, what happens? This salt undergoes hydrolysis, MgOHCl. मैंने बताया ना, hydrated salts when heated, they undergo hydrolysis. MgOHCl, this is a high melting solid. High melting solid. Melt hoga hi nahi. Therefore, this is not heated further. This is heated in the presence of dry HCl gas. What is the purpose, Socho? Here is a chemical principle. Very important chemical principle. HCl ये तो क्या होता है? Dry HCl gas, further वो reaction नहीं होता because the other product in this reaction is HCl. Since you are heating in presence of HCl, backward reaction, वो reaction होगा नहीं.
HCl, one of the products. तो क्या कर रहे हो? HCl को ही ले रहे हो. So वो reaction नहीं बनेगा. सीधा you get molten MgCl2, molten MgCl2, which is electrolyzed in Dow's process, name not necessary. Dow's. Now, so what is the chemical principle involved? To stop any reaction, अगर कोई reaction को रोकना है, store the substance in the environment of one of the products. You get magnesium. Impure आएगा, electrolyze करके उसको purify करो. Most of the metals are purified through electrolysis only. Zinc, even lead, copper, silver. Now, to stop any reaction, store the substance. Okay. Beryllium carbonate is less stable. Less stable. It decomposes to give BeO plus CO2. So क्या करेंगे हम? Keep that in the environment of atmosphere of CO2. BeCO3 को रखो, कुछ नहीं होगा इसको. Decompose नहीं होगा. Le Chatelier's principle is applied. एक चेयर देना बाबा. And magnesium is also extracted from sea water. Same procedure, sea water. Hydrated? हाँ. हाँ, हीट किया तो पहले वो हाइड्रोलाइज हो जाएंगे. H2SO4. H2SO4 and cupric oxide. बंद किया. कैप को क्यों खा रहे यार? नाश्ता नहीं किया क्या? Now the last
How many of you are doing conversions? Anything to anything? Not yet started. The best way is two people write two compounds, one compound each, and they convert X to Y, Y to X. But they should not consult. You write whatever that comes to your mind. लिखो एक compound, organic compound. तू भी एक लिखो. Anything that comes to your mind. क्या लिखा तूने? हाँ? हाँ? Benzene? NH2 and CH3. Okay. हाँ. तूने क्या लिखा? हाँ? Benzene. Three steps. Three steps. क्या करना है? डाइएजोटाइजेशन H3PO2 किया तो ये चल जाएगा. KMnO4, hot KMnO4, you get COOH, decarboxyl. और इधर से इधर methylation, Friedel-Crafts methylation, and then nitration at ortho position. Listen, ऐसा करते रहो. Even if you do not do it completely, plan a mental picture that not only improves your thinking process, and whenever a question is asked, immediately you get an idea. Diazotization, reduction, oxidation, decarboxylation. They are the names. Now, last process. अगर पहले NH2 आए तो क्या करना है? पहले नाइट्रेशन किया, SN प्लस HCl डाला, एनिलीन बन गया. हाँ, उसको प्रोटेक्शन बोलते. एसिटानिलाइड बनाना है, एनिलीन को एसिटानिलाइड बना के प्रोटेक्ट करके देन फ्रीडेल-क्राफ्ट करना है. या तो CH3 सीधा नाइट्रोजन के ऊपर जाता है, N-मिथाइल एनिलीन, NN डाइमिथाइल एनिलीन, NNN ट्राइमिथाइल एनिलीनियम क्लोराइड भी आएगा, ऑक्सोनियम. नाउ अमोनिया सोडा सॉल्वे प्रोसेस. तो इसके तुरंत बाद आई विल गिव यू द 8 पॉइंट्स ऑफ ऑर्गेनिक विच यू कैन अप्लाई. Ammonia-soda solve process. For the manufacturer? Sorry? Washing soda. Sodium carbonate. Sea water plus ammonia plus carbon dioxide. Sea water contains NaCl and H2O, NH3 plus CO2. ये दोनों मिलके क्या बनेंगे? अमोनिया एंड वाटर, अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2, ammonium bicarbonate, that will combine with NaCl to give NaHCO3 plus NH4Cl. Okay. देखो, all compounds of all alkali metals all compounds of all alkali metals are soluble except except sodium bicarbonate. क्या बोला? बस तूने क्या बोला? लिथियम ने, सोडियम. All compounds are soluble. Chlorates, perchlorates, even phosphates, except sodium bicarbonate.
So sodium bicarbonate precipitates here, which is separated and heated to get Na2CO3, the all important washing soda. And 90% of detergent is nothing but sodium carbonate. वो Nirma जो है ना, there is nothing but washing soda. Sorry? और 10H2O तो क्रिस्टलाइजेशन में आ ही जाएगा. NaHCO3 के साथ हीट किया तो वो भी क्रिस्टलाइज होता है. क्रिस्टल, when a crystal is formed, water enters the crystal. All compounds of all alkali metals. And a few words about solubility. The Gujarat state government किताब में है, all nitrates are soluble ऐसा. All nitrates are soluble. हाँ, बस यही एक प्रेसिपिटेट होता है. एंड हाँ बस the salt to eat, it contains other salts also. It's not essentially sodium chloride. Mostly magnesium chloride होगा. NaCl is not deliquescent, but salt when kept in open air absorbs moisture because of magnesium chloride. Over. Inorganic chemistry is over. Periodic table we taught everything except ionization potential. Electron gain enthalpy पढ़ाया, electron negativity पढ़ाया, metallic character वगैरह पढ़ाया. अब वो radii. हाँ? कौन सा? Thermal stability of covalent compounds, small atoms, not stronger bonds. Ionic compounds we can never decide. Ionic compounds they depend on. Wait a minute. देखो, how many factors are involved? I'll tell you. NaCl का thermal stability सबसे पहले इसको अप्लाई करना है ना, मीन्स डिपेंड्स ऑन हीट ऑफ सब्लिमेशन, लैटिस एनर्जी. लैटिस एनर्जी ऊपर डिपेंड करता है. लैटिस एनर्जी ज्यादा है तो ये जल्दी नहीं होता. नेक्स्ट, Cl माइनस इलेक्ट्रॉन देना है ना, दैट डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ Na प्लस एंड आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ Cl माइनस. इतने सारे फैक्टर्स. यहां चार्ज है, साइज है. चार्ज, साइज, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड आयनाइजेशन पोटेंशियल. चार, यहां चार, और दूसरा कंपाउंड के लिए तो उसका चार. यू कैन नेवर कंपेयर, दैट इज ह्यूमनली इम्पॉसिबल. J.D. Lee in one paragraph says, theoretically it is possible to predict the solubilities, but small differences in any of the values will bring large changes in solubility. Therefore, they are unpredictable. करके दे दिया. Theoretically predict करने की जरूरत नहीं. Next, okay, let us look at the 8 points of organic. And their application. %25% of reactions are based on these 8 points. 25%. 25% regrouping. Regrouping. 25% mechanism oriented.
and 25% unpredictable. I think you have come for the first time today. Coming regularly. Now, 1 E plus का मतलब क्या है? If you remember E plus, positive is electrophile, electrophile is positive. दो चीज हो गया. E plus is electrophile. Who will act as electrophile? All cations and electron deficient species. All cations and electron deficient species will act as electrophile. All cations, they can act, they may not act, that's a different matter. Example, CH3 plus, Cl plus, Br plus, NO2 plus, etc. तो सर Cl प्लस बनेगा क्या? नहीं बनेगा. उसका बाप आया तो प्लस बनना ही पड़ता है. इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिटी कोई आए तो नाउ 2 Nu माइनस, बस इतना याद रखा तो क्या पता चलेगा? माइनस इज न्यूक्लियोफाइल. न्यूक्लियोफाइल मीन्स माइनस. न्यूक्लियोफाइल. Who will act as nucleophiles? All anions and molecules with lone pair on the central atom. Come on, molecules. NH2 is a nucleophile with a lone pair. OH. Cl minus. So, chlorine when bonded to someone else will become more powerful, Cl plus. 3. Pi bond है तो एडिशन है. पाई बॉन्ड है तो एडिशन है. हिंदी है. What do you mean by addition? Add XY. Add XY means break the pi bond, X on one side, Y on the other. Don't worry about X on which side, Y on which side. Break the pi bond. Pi bond फट. यहाँ X, यहाँ Y. Fourth point. No pi bond. Pi bond नहीं है तो substitution. Fifth point. What about benzene? Benzene, carboxylic acid and their derivatives. Who are they? Anhydride, ester, acid halide, amide, carboxylic acid and their derivatives. इन सब में क्या है? हाँ? इन सब में no stationary pi bond, no addition. No stationary pi bond, no addition. So इनमें substitution ही होता है. 6. Carbon-carbon pi bond
is treated as, I repeat, it's not every pi bond I am talking about. It's only carbon-carbon pi bond. Carbon-carbon pi bond is treated as what? Is negative charge. ये नेगेटिव है, क्यों? देखो, two electrons are enough to bind two atoms. Two atoms. But 4 electron means surplus negative charge. मतलब 4 इलेक्ट्रॉन है ना pi bond में, so that is negative. Surplus negative charge. Therefore, carbon-carbon pi bond is negative charge. Is negative. Seventh point. Look at the charge on carbon only. कार्बन के ऊपर चार्ज को ही देख के रिएक्टिविटी बताओ, बाकी किसी का नहीं. Last point, alkyl groups drive pi bonds away from them. Alkyl groups drive pi bonds away from them. That's all. 5 minutes, 8 points. सबका बताऊंगा ना, बाकी सब समझ में आया क्या? अभी सबका एग्जाम्पल दूंगा ना. Alkyl groups drive pi bonds away from them. Now, application 1, 5 point application. Alkenes and alkynes, what type of reactions? बताओ, 8 points से ही आंसर निकालना है. pi bond है तो एडिशन है, pi bond है, एडिशन है, एडिशन. Carbon carbon pi bond is negative. This is negative. Who can approach? Only positive can approach. Therefore, electrophilic addition. Electrophilic addition. 2. Alkyl halides, alcohols, ethers. What type of reactions? Why? No pi bond substitution. No pi bond substitution. And what type of substitution? Look at the charge on carbon. Look at the charge on carbon only. Plus delta, plus delta, plus delta. Who can approach such a carbon? Nucleophile. Minus. Minus means nucleophile. Therefore, nucleophilic substitution. अच्छा, alkene. So 5 chapters हो गया. क्या करना है? बस जो भी दिया हुआ ऐड करना है उधर. Now, after this I will get those 90 points for you.
which covers reagents also, reactions, reagents. 3. Benzene, what type of reactions? No stationary pi bond. So substitution क्या होगा? और benzene is negative. 3 pi bond है ना? Benzene is a bundle of negative charge. Therefore, this is minus. Only a plus can approach. Electrophilic substitution. Electrophilic substitution and H plus की जगह E plus. H plus की जगह E plus. This is called electrophilic aromatic substitution. EARS. Nonsense. Now, कोई तो चीज बताना भूल गया. Next. 4. Carbonyl compounds and nitriles. बताओ कौन सा रिएक्शन? पाई बॉन्ड है तो एडिशन है. Look at the charge on carbon. Positive because of the other one. Electronegative वाला बैठ गया ना. Now, therefore, nucleophilic addition. Then, carboxylic acids and their derivatives RCOCl वगैरह. यहाँ क्या है? No stationary pi bond because there is a resonating pi bond है ना? RCO minus double bond OH plus. Therefore, here look at the charge on carbon, positive. So, no stationary pi bond, no addition, therefore substitution. Nucleophilic, this one is called acyl group. Nucleophilic acyl substitution. Substitution on the acyl group. Nucleophilic acyl. What is acyl? RCO. RCO is called acyl and CH3CO is called acetyl, common name. And C6H5CO is called benzoyl. Benzoyl. That's all. Have you all understood? Look at the charge on carbon only. Yes. What about elimination? How many types of organic reactions are there? 4. Two. Addition and substitution. But that's all. What about elimination? Huh? 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 नहीं बाबा. देखो, सिग्मा बॉन्ड की जगह पाई बॉन्ड. कोई इडियट जाके डॉक्टर मेरा हाथ यहां तक कट के वो वुडन हैंड लगाओ जयपुर वाला पूछेगा, विल एनीवन वॉलंटियर दैट? अगर हुआ तो जाएंगे, लेकिन तो हेल्दी हैंड को लेके डॉक्टर प्लीज यहां कट कर देना.
So what is elimination? What is elimination? It is an accident. एक बुलडोजर आके ठोक दिया. Elimination is accident. ये देखो, CH3, CH2, Cl, alcoholic KOH. What is this alcoholic KOH? What does the combination produce? No. ROH and K plus OH minus. This one being a strong base, it takes proton even from alcohol, which is not at all an acid. Alcohols are not acids. Ulta, they are bases. They have lone pairs to donate. Alcohols are not at all acids, but this base forces to become an acid. Therefore, RO minus is a super strong base. वो क्या करेगा? यहाँ क्लोरीन खींच रहे हैं ना, तो ये अल्फा बहुत पॉजिटिव चार्ज है, RO माइनस जाके इसको लेके चले जाएगा. In hot summer, I went up a hill to a temple. मंदिर गए थे. वहां बाहर मैंने चप्पल छोड़ के गया था. बाहर आने के बाद कोई है ही नहीं. मेरा गाड़ी तो नीचे है. मेरा चप्पल गायब. तो मैं क्या करूंगा? वहां टूटा फूटा वेरी ओल्ड बेकार चप्पल है, फिर भी पहन के है. क्यों? बस दैट्स ऑल. या तो पैर जल जाएगा ना. Therefore, RO minus will take even that बकरा हाइड्रोजन, थोड़ा सा पॉजिटिव, फिर भी खींच लेगा. जैसे वो खींच गया, यहाँ कार्बन बन गया नेगेटिव, ये नेगेटिव इधर आएगा, वो Cl माइनस के हाथ में रख के भेजेगा. So, this is an accident. Nobody volunteers to have a palace. A palace को तोड़ के कुछ झोपड़पट्टी बना के दो. कोई ऐसे पूछेगा क्या? ये बंगलो अच्छा नहीं है, इसको तोड़ दो, इसकी जगह एक झोपड़पट्टी बनाओ. भिखारी का ठिकाना. So, I hate elimination reactions. I hate. They are all accidents. Now, CH3, CH double bond, CH2, HBr. अब देखो, H plus Br minus, प्लस कहा जाएगा? Alkyl groups, last point. Alkyl groups drive pi bonds away from them. ये pi bond इधर आ रहे हैं ना, ये alkyl क्या बोलेगा? जा उधर. So this carbon is minus. So as a result, what happens? CH3, CH, CH2H, and this one will become plus. Br minus अभी आराम से है अटैक करेगा. What is this? ये क्या है? Marconic rule. Negative part of the addendum. Negative part of the addendum attacks that carbon with less number of hydrogens. यहाँ हाइड्रोजन कम क्यों है? क्योंकि हाइड्रोजन की जगह अल्काइल है, इसीलिए. Alkyl groups push hyperconjugation. Next, all reactions of alkyl halides, all reactions of carbonyl compounds, क्या बताया मैंने एक दिन? All reactions of carbonyl compounds, dehydration if possible. If possible. When is it not possible? When is it not possible? Or when is it possible? Intermediate नहीं, donkey seg नहीं.
If possible means 2 alpha acidic hydrogens are there, are required. बकरा हाइड्रोजन चाहिए ना, 2 अल्फा हाइड्रोजन है तो H2O निकल जाएगा. So CH3 C double bond O कार्बोनाइल, H2NOH, ये ज्यादा एसिडिक नहीं है. H थोड़ा पॉजिटिव है, फिर भी इसके लिए काफी H2O आउट. H2NNH2 हाइड्रोजीन, H2O आउट. H2NNH C6H5 एक है फिनाइल हाइड्रोजीन. H2NNH what is this? 2,4-dinitrophenyl hydrogen, 2,4-DNP, H2O. What is this? H2NNH, CONH2. इसको क्या बोलते हैं? सेमी कार्बाजाइड. Semi carbazide. Which will act as nucleophile here? ये वाला NH2. क्यों? These two are in conjugation with this. These two are positive. Semi carbazide. Genes become, these are all genes and they become zones. Genes become zones. So apart from these reagents, and most of the elimination reactions are because of the power of the reagent. Soda lime distill, NaOH, what is that for? NaOH, soda, lime, distill, decarboxylation. So when you look at the reagent, you should be able to predict the product, predict what it is going to do. मैंने बताया ना, PCC, PDC क्या करेंगे? Controlled oxidation, alcohol to carbonyl, stop. H2PDS दो जगह आएगा. H2PDS कहा? Rosenmund reduction and triple bond to cis alkane, stop. Triple bond to cis alkane. Sodium में लिखकर अमोनिया, trans alkane. O3H2O zinc, ozonolysis. So looking at the reagent, alcoholic KOH, alcoholic KOH or NaNH2 or alcoholic KOH followed by NaNH2. Dehydrohalogenation, किसको एलिमिनेट करने के लिए? हैलोजन को. Dehydrohalogenation. So reagent का लिस्ट बना दो and named reactions का लिस्ट बना दो. वो क्या है? वो हैंडबुक में 23 reactions are given. Now LiAlH4 क्या करेगा? Converts everyone to alcohol except amides. सबको अल्कोहल बना देगा. और COCl, LiAlH4. How does it react? हाँ, पहले LiAlH4 का ब्रेकअप बताओ. Li plus AlH4 minus. Li plus is a spectator. Li plus को भूल ही जाओ. Here this is H minus and AlH3. And H minus is the nucleophile. So H minus यहाँ अटैक करेगा, Cl चला जाएगा, और C डबल बॉन्ड वो H. अब क्या होगा? दोबारा एडिशन होगा और C डबल बॉन्ड वो H. ब्रेक बॉन्ड
H minus यहाँ RCH H O or AlH3. It is followed by hydrolysis. In all reactions where you find LiAlH4, it is succeeded by water. इसके आगे वाटर होगा ही होगा. LiAlH4 सबको अल्काइल बना देगा, लेकिन NaBH4 carbonyl only, carbonyl to alcohol only, सिर्फ यही करेगा. Now पच्चीस मिनट. Now H2N NH2 क्या होगा बताओ कहानी. हाँ, डीकार्बोक्सिलेशन. हाँ, हाइड्रोजीन. जिंक एमोल्गम HCl क्या बोलते इसको, क्लेमेंसन रिडक्शन. कार्बोनाइल टू alkane, carbonyl to CO becomes CH2, carbonyl to alkane. H2N NH2, H2N NH2 and KOH, Wolff-Kishner. ऐसा रिएजेंट देख के रिएक्शन को पहचानना है. और ऑर्गेनिक अच्छा है, गुड. कितना 200 घंटा किया होगा ना, रगड़ के. मैं मुश्किल से 30 घंटा पढ़ाता हूं. नाउ यस, 8 पॉइंट से करना है. 8 पॉइंट्स. 5 बॉन्ड है तो 5 बॉन्ड है तो एडिशन है. कार्बन प्लस है इसीलिए न्यूक्लियोफाइल. हु कैन एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल? lone pair and nitrogen. So this will attack CH3 CH O minus NH2 NH2. When you donate, what happens? प्लस बन जाओगे ना. दिस नाइट्रोजन इज प्लस. नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? When an electronegative atom is plus, it makes its neighbor plus. बाजू हाइड्रोजन को प्लस बना देगा. समझ में आ रहे ना? So this CH3 CH O minus and NH2 and this H plus will attack here. H plus यहाँ चला गया. अब क्या होगा? क्यों? एक ही कार्बन के ऊपर 2 OH नहीं चलेगा. OH 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 OH. सर आप N को O बोल रहे हो? या नाइट्रोजन ऑक्सीजन में कोई फर्क नहीं है. बताया ना मैंने. CH3 CH डबल बॉन्ड NNH2 हाइड्रोजोन, एसिटाल्डिहाइड हाइड्रोजोन. सीधा किया तो क्या होता है? ऑल रिएक्शंस ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स डिहाइड्रेशन. H2N NH2 2 बकरा हाइड्रोजन है. दो बकरा हाइड्रोजन रिमूव. व्हाट इज ऑल्डोल? Dehydration. Alpha hydrogens of one molecule and carbonyl oxygen of another molecule. This is the aldol product of dilute NaOH. डाइल्यूट NaOH देखा तो aldol बता रहे. X क्या है? डिहाइड्रेशन के बाद ये आया. किन दोनों के बीच में? देखो कभी भी यहां डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स आते हैं, कॉन्जुगेटेड.
This is the double bond that is formed between oxygen and hydrogen. हाइड्रोजन किसका है, ऑक्सीजन किसका है? जिसका ऑलरेडी ऑक्सीजन है ना, he supplied alpha hydrogens, so that fellow H2, the other fellow O. बस जहां कटेंगे CH डबल बॉन्ड O, CH2 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 CH डबल बॉन्ड O, 1 2 3 4 5 6. अब क्या होगा? इंट्रामोलिक्यूलर ऑर्डोल, एक ऑक्सीजन इधर से, दो हाइड्रोजन उधर से निकालो. कौन सा हाइड्रोजन निकालना है? ओनली अल्फा, बिकॉज ओनली दे आर एसिडिक, ऑफ कोर्स स्लाइटली. खेल खत्म. कहानी तुम्हारा बोर्ड किताब में बहुत अच्छी तरफ दिए हुए, बहुत सिंगल स्टेप में दिया, लेकिन बाद में इसको अननेसेसरली एक्सपेंड किया. ये काफी था. OH माइनस फ्रॉम डाइल्यूट स्ट्रॉन्ग बेस, याद रखना. स्ट्रॉन्ग बेसिस लिस्ट मालूम है ना? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम वगैरह हाइड्रोक्साइड, फर्स्ट ग्रुप हाइड्रोक्साइड. वो स्ट्रॉन्ग है लेकिन उसको डाइल्यूट कंडीशन में लेना है पानी डाल के. नाउ क्या होगा? OH माइनस जाके ये अल्फा हाइड्रोजन के ऊपर गिरेगा और ये बॉन्ड इधर खींचा गया एंड सीधा इन्होंने बॉन्ड को लेके गया. एंड दैट इज ट्रू बिकॉज दिस इज, व्हाट इज दिस? चार्ज, नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स. Electrons moving here will be moving there. That's it. ये क्यों हुआ? OH plus H plus को क्यों अटैक किया? The chief product is this. All oxygens want to become H2O. That is the chief product. The other one is a cheap product. CH3 CHOH, CH2 CHO. This is called 3-hydroxybutanol. एंड यहां ऑटोमेटिक लॉस ऑफ वाटर, किसी को बोलने की जरूरत नहीं. जहां तक ऑक्सीजन को एसिडिक हाइड्रोजन मिलेगा, ऑक्सीजन को अगर एसिडिक हाइड्रोजन मिलेगा तो छोड़ेगा नहीं. प्लीज लुक हियर ऑल ऑफ यू, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. दोज हु हैवंट कम टुडे मस्ट फील फॉर देमसेल्व्स. ऑफ कोर्स they have the video. This is the most essential part of my lecture. Come on. What is the wrongest thing in दुनिया में? Quoting resonance as responsible for some phenomenon. ये क्यों हुआ? रेजोनेंस के लिए हो. कितना गंदा है देखो. CH2H CH डबल बॉन्ड OH माइनस, यहां CH2 माइनस बन गया. क्यों बन गया? क्यों बन गया? अरे कोई पागल आदमी है कि बुलेट मारा मुझे. सर आपने ऐसे क्यों किया करके मुझे पूछा तो मैंने कुछ किया क्या? मैंने रास्ते का बिल्कुल लेफ्ट में जा रहा था पैदल, कोई ट्रक आके मुझे ठोक दिया, मेरा हाथ पैर टूट गया और मैं अस्पताल में. तो तू है कि सर ऐसा क्यों किया? मैंने किया थोड़ी, मेरे साथ हादसा हुआ. हादसा, ठीक है ना? सो एलिमिनेशन रिएक्शंस आर एक्सीडेंट्स एंड वन ट्राइंग टू एक्सप्लेन देम मीनिंगलेस. दीज ब्लडी अमेरिकन्स डू वंस अगेन. Now, look here. So, what is this called? Carbanion. Carbanion. ये क्यों फॉर्म हो गया पता? OH माइनस आके H2O बनना था, उसको चोर आके चोरी करके गया. Now, तुमको क्या बताया जाता है? C माइनस इसीलिए बन गया कि रेजोनेंस स्टेबल है. CH2 डबल बॉन्ड CHO माइनस. व्हाट इज दिस कॉल्ड?
Enolate, enolate, and this is called enolization. Enolization, enolate. In, ol, जिसमें से H नहीं गया, H गया, H प्लस चला गया, anion, enolate. हाँ, रेजोनेंस के लिए हुआ. मैं एक चक्कू लेके खुद को ऐसे सब मारा. सर ऐसे क्यों कर रहे हो? मेडिकल इंश्योरेंस है ना. एक डंडा लिया, मेरा गाड़ी को फटाफट मार रहा था, ग्लास को. सर ऐसे क्यों कर रहे हैं? इंश्योरेंस है ना. इंश्योरेंस के लिए कोई करता है क्या? charge is bad. No one volunteers to have the charge. All charges expect to be neutralized. ऐसा कोई वॉलंटियर नहीं करेगा. So, quoting resonance as the reason for any phenomenon is meaningless, idiotic. ऐसा क्यों हुआ? रेजोनेंस स्टेबिलिटी के लिए इनोलाइजेशन होगा. Don't cite meaningless things. Stop doing that. Think chemistry differently. ये क्यों ऐसा क्यों हुआ? एक्सीडेंट हो गया. OH माइनस आके अल्फा हाइड्रोजन को ले चला. Now, so carbanion thus formed CH2 minus CHO, and this will attack another molecule CH3CH O minus CH2, and this will get a H. H plus कहाँ से मिलेगा? जो गया वही, या तो पानी या तो किधर से भी मिलेगा. CH3. नेक्स्ट. हाँ, मालूम नहीं. देखो, काइनेटिक मीन्स रेट, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर. थर्मोडायनेमिक, एनर्जी प्रोफाइल, ट्रांजिशन स्टेट. आइसोटोपिक, काइनेटिक, थर्मोडायनेमिक, आइसोटोपिक एंड mechanical changes of organic reactions. क्या करना है? CD छोड़ दो. Cannizzaro reaction, fourth order. सेकंड ऑर्डर ऐसा हुआ तो ऑल्डिहाइड के साथ थर्ड ऑर्डर, कीटोन के साथ फोर्थ ऑर्डर. गंदा. काइनेटिक्स नहीं है, थर्मोडायनेमिक्स नहीं है, ट्रांजिशन स्टेट्स, इंटरमीडिएट्स सब छोड़. डोंट वेस्ट योर टाइम. नाउ CH3, CCH3 है ना. H प्लस. अब क्या होगा? इट्स लाइक ए मंकी एंटरिंग ए मैंगो गार्डन. आम का बगीचे में बंदर क्या करेगा? हैवोक क्रिएट करेगा. हैवोक, हल्ला मच जाएगा. इस कंपाउंड का नाम क्या है? पिनाकोल. क्या होगा? व्हाट इज द रोल ऑफ प्लस इन ए ग्रुप? बिकारी. इधर जाके भवती भिक्षान देहि, भवान भिक्षान दधातु. नाउ ऑक्सीजन डोनेट करेगा, राजा महाराजा के जैसा. डोनेट करने के बाद ये पॉजिटिव इसके ऊपर गिरेगा, ऑक्सीजन के ऊपर. अब क्या करेगा? कार्बन को वाट लग गया, H2O चला गया. All oxygens want to become H2O, and this OH awaits only. OH is awaiting just a proton. जो प्रोटॉन मैंने दिया वो लेके जाएगा. नाउ अब क्या होगा?
दिस इज ए सेकेंडरी कार्बोकैटायन, दिखने में टेस्टी दिख रहे, लेकिन नाम के वास्ते यू हैव ओनली 6 अल्फा हाइड्रोजन्स, हाइपर कॉन्जुगेशन, इधर हाइड्रोजन है नहीं, सो दिस इज सेकेंडरी, देयरफॉर दिस मिथाइल ग्रुप शिफ्ट हो जाएगा। कौन शिफ्ट होगा? These 2 electrons will go. ये ऐसा घूमने वाला इलेक्ट्रॉन अभी ऐसा घूमेंगे, बस इतना ही। एंड याद रखना, ईच वन इज टेट्राहेड्रल टू द अदर, CH3 CH2 प्लस, ऐसा है ना। अब क्या होगा? इन दोनों के भी 109.5, तो ऐसा घूमने वाला इलेक्ट्रॉन ऐसा घूमेंगे, बस इतना ही, और ये प्लस बनेगा। एंड दिस कार्बन अलाउस, सो हाइड्राइड शिफ्ट, मिथाइलाइड शिफ्ट, ये सब जरूरत नहीं। क्या शिफ्ट हो गए? चार्ज, हवा इधर घूम रहा था, वहां लो प्रेशर एरिया, तो उधर जाएगा। इट इज लाइक साइक्लोनिक विंड that goes to wherever there is a low pressure. Gases travel from diffuse high pressure to low pressure. It's but obvious. Now, क्या हुआ? CH3, सुनो, कैसे देगा? ये देखो, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है ना, ये लोन पेयर सिर्फ कार्बन को देगा, नहीं, इस कार्बन को देगा जिस कार्बन के साथ वो बॉन्डेड है। देखो, दिस इज लोन पे 1 2 3 थर्ड पोजीशन। नहीं भैया, ये उधर कैसे जाएगा? नहीं, अगर इधर ये इधर गया तो COC इपॉक्सी फॉर्म होगा क्या? हाँ, CH3 CCH। Now, up this is stabilized by hyperconjugation, but this is stabilized by resonance. Therefore, this is hydroxycarbocation, more stable. ये इसको देगा, देने के बाद CH3 C double bond OH and CH3C phenolone. Now H plus will go, H plus. So आया H plus, गया वही. So H plus is only catalyzing this acid catalyzed dehydration. Phenol, phenolone. Now अब क्या होगा? H2O चला जाएगा, OH minus and H plus. Ring expansion means 1 2 3 4, कुछ नहीं. The electrons, bond means ये लाइन नहीं है, ये बॉन्ड नहीं है, 2 electrons moving. ऐसा घूमने वाला इलेक्ट्रॉन ऐसा घूमेंगे और ये प्लस बनेगा. नुकसान इसका है, इसका कोई नहीं, प्लस. Then of course hydrogen hyperconjugation 5-1. So cyclopentene. Now, so phenol, phenolone with ring expansion, 5-membered ring is more stable than, no, 6 सबसे stable है, 6 stable than 5, stable than 7. कितना कवर हुआ ऑर्गेनिक? 10%? 50? 25%. मुझे मालूम नहीं. रेजोनेंस हाइब्रिड में
सबसे स्टेबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऐसा भी रहता है कि सबसे स्टेबल रेजोनेंस, नहीं, जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर पॉजिटिव नहीं है, ऐसा ऑक्सीजन अगर प्लस बन गए तो वो स्टेबल नहीं। ओके, लेट अस टेक a 2 से ब्रेक।